व्हाई डू वी ऑलवेज स्टार्ट विद द ऑब्जेक्ट ड्राइंग ओनली, या फिर हमारा बेस क्यों होता है ऑब्जेक्ट ड्राइंग व्हेनेवर वी आर गोइंग टू डू द डिजाइन और व्हेनेवर वी आर गोइंग टू डू द आर्ट। किसी एक व्यूअर को, डिजाइनर को या फिर मैन्युफैक्चरर को समझ में आए कि व्हाट ऑल पार्ट्स आर देयर, व्हाट ऑल थिंग्स आर देयर, व्हाट ऑल textures are there, what all materials are there. To have a better understanding, we need to have the exploded view of that object. So, the basic fundamental or the basic element of your drawing is what? The shape. Hello everyone, welcome back to Physics वाला Design and Architecture. आज के इस वीडियो में हम रिविजन करने वाले हैं ऑफ ऑल द चैप्टर्स ऑफ ऑल द टॉपिक्स विच वी हैव लर्नड. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि हमारा रिविजन ज़रूरी क्यों है यहाँ पर. सपोज करिए कि आपने किसी भी चैप्टर को याद करने के लिए 1 हफ्ता लिया या फिर 2 दिन लिए, राइट, एंड देन देयर वाज अ गैप ऑफ सम डेज इन बिटवीन. नाउ देयर इज दिस ह्यूमन टेंडेंसी कि आप वो चीज़ों को भूल जाओगे. सो इसीलिए व्हाट वी आर डूइंग कि अगर कोई भी पॉइंटर्स आपके मिस हुए हैं या फिर कोई भी टॉपिक आपका क्लियर नहीं हुआ है, सो वी आर गोइंग टू डू अ क्विक रिविजन फॉर द सेम थिंग. सबसे पहला चैप्टर जो हमने कवर किया था दैट वाज आवर ऑब्जेक्ट ड्राइंग. Now the question is कि why do we always start with the object drawing only, या फिर हमारा बेस क्यों होता है object drawing whenever we are going to do the design or whenever we are going to do the art. See, everything which is there around us is made up of what? Shapes. हर चीज का आपका एक बेस जो है वो बेसिक शेप होने वाला है, ठीक है. अब इस शेप के कॉम्बिनेशन से ही आपके फॉर्म्स बनते हैं और फॉर्म्स के कॉम्बिनेशन से आपका क्या बनता है, आपके ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, आपके कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स बनते हैं. देन वी आर गोइंग टू कवर द कॉम्पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स. कॉम्पोजिशन मतलब क्या होगा आपका कि हाउ यू आर अरेंजिंग दोज ऑब्जेक्ट्स इन योर plan or in your drawing so that it looks aesthetically appealing, it doesn't look bad as well. Then exploded view of the object. Exploded view क्या होता है? Let's say you have some object with you. For example, you have this pen. Now when you are unfolding this pen or opening this pen, how the layers will come out, या फिर उस पेन में जो भी objects हैं, जो भी layers है, उसका arrangement कैसा होगा, that we are going to learn in the exploded view. Then we have प्लान एंड एलिवेशन. अब प्लान एंड एलिवेशन हमारा आर्किटेक्चर के टर्म से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, whereas it is very important in the डिजाइन as well. अगर देखा जाए, सपोज करिए कि आपके पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है या कोई भी एक चीज है, हाउ इट इज गोना लुक अगर आप उसको एकदम ऊपर से देख रहे हैं, अगर आप उसको 2D में देख रहे हैं, हाउ दैट थिंग विल लुक लाइक. नाउ द फर्स्ट वन इज आवर ऑब्जेक्ट ड्राइंग. एक बार इसका डेफिनेशन देखते हैं. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्राइंग? Object drawing involves creating detailed and accurate representation of physical objects using various drawing techniques and perspective. Okay. Now, in object drawing, let's take a new page. Object में हमारा सबसे पहला क्या था? We started with the line, right? आपका बेसिक एलिमेंट ऑफ द ड्राइंग क्या है? दैट इज योर डॉट. विद द कॉम्बिनेशन ऑफ द डॉट you form your line. With the combination of your line you form your shape. With the combination of your shape you form your form. Dot, line, shape and your form. So सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है लाइन से. यू नीड टू हैव द कंट्रोल ऑन द लाइन. जब तक आपका लाइन का क्वालिटी अच्छा नहीं होगा, आपके स्केच का, आपके ड्राइंग का क्वालिटी भी अच्छा नहीं होगा और वहां पे एग्जाम में यू लूज द मार्क्स. सो स्टार्ट विद द लाइन स्केचिंग और लाइन ड्राइंग टुडे. सी, everything is a combination of the shapes, whether there are humans, whether those are animals, whether anything, whichever is there in front of you, that is the combination of the shapes. अगर हम ह्यूमन की बात करें, we start with the basic mannequin. अब mannequin हमारा कैसा शेप से होता है? सी, ह्यूमन एनाटॉमी डिफिकल्ट लगता है बच्चों को. So what we can do, we can divide it into the shapes part. First we have the
face, then we have the lower body, then we have the stomach, pelvic area, now there is this specific head size which is given for your each section or for your each part. See what I am doing, I am just combining the shape and then I am trying to make the body here. अब what I'll do, I'll put the mass on it. जहाँ जहाँ भी आपके muscles हैं, you will start putting the mass on that. So this is also what? A combination of the shapes. अगर आप face देखो, face is also formed with what? With your combination of the shapes only. You divide that area, that which part is gonna fall where, and then you start just sketching around that. So the basic fundamental or the basic element of your drawing is what? The shape. Moving further, the techniques which we are going to use when we are presenting or when we are doing the object drawing. First is your line drawing. Very important. As I told, आपका बेस जो होगा वो एक लाइन का क्वालिटी होगा. अगर आपका लाइन का क्वालिटी खराब हुआ या फिर अच्छा नहीं हुआ, you are going to lose the marks over there. So you need to start practicing the lines. आपको अपने लाइन पर कंट्रोल रखना चाहिए. You need to put the pressure less on the pencil so that you don't get that stark dark pencil line. Then shading. शेडिंग की जरूरत कहाँ होती है? अब हम शेडिंग में हैचिंग, क्रॉस हैचिंग और ब्लेंडिंग भी करते हैं. We always use these things in the exam, especially these two, to save our time. Now see the rendering techniques. This is for hatching, then your cross hatching, then you have your stippling, and then you have your scumbling. This is your scumbling, right? And there is one move which is your blending. Now I'll show you कि क्या क्या hatching में होता है, cross hatching कैसे करते हैं या फिर बाकी चीजें हम कैसे करते हैं. So we're gonna start with the hatching. We mostly use this one and this one, hatching and cross hatching in the exam. Okay. So hatching is drawing the lines in one direction. This will do what? This will give your object a third dimension. This will give the texture. This will tell how much the amount of light is falling on that thing. Cross hatching, drawing the lines in two opposite directions. Texture, intensity of light, your third dimension, ये सब चीजें बताने के लिए या ये सब चीजें शो करने के लिए we use these techniques. Stippling is what? Stippling is using the dots to create that texture like this. Now this is a little bit time taking. Scumbling, moving your pen in different directions. That is your scumbling here. Blending is you are taking your color and you are blending that. कितना light और कितना dark होना चाहिए. अब exam में क्योंकि हमारे पास time कम होता है, we use hatching, we use cross hatching, we
avoid using stippling until and unless it is required and we use scumbling. सो ये 3 मेथड हम एग्जाम में यूज करते हैं अपने ऑब्जेक्ट में या अपने ड्राइंग में इंटेंसिटी दिखाने के लिए, या फिर ड्राइंग में थर्ड डिमेंशन दिखाने के लिए, या फिर लाइट एंड शैडो दिखाने के लिए, टेक्सचर दिखाने के लिए वी यूज जनरली दीज 3. ओके, पर्सपेक्टिव ड्राइंग शोज ऑब्जेक्ट्स इन थर्ड डिमेंशन, राइट? नाउ suppose you have your object here. Let's say you have what? A pair of your spectacles, and you have to show those in the third dimension. So how you gonna draw this? How you will proceed with this thing? What you'll do? You'll start with the basic box, and then inside the box you will start your object or fitting your object or drawing your object in such a way देखने में वो सही लगे, प्लस पर्सपेक्टिव में होना चाहिए. पर्सपेक्टिव की जरूरत क्यों होती है? दिखाने के लिए कि उस प्लेन पर एक एंगल से हमारा ऑब्जेक्ट कैसे दिखेगा. अब सपोज करिए कि these spectacles are facing towards the viewer. So what you gonna do? You gonna start with the box, give your guidelines in that box, right? So what I just did, I followed my guideline, I made it easier. और इससे इसको construction lines भी बोला जाता है. Then we are gonna draw this thing. I'm just gonna follow the line which I have drawn earlier. Again, I'll give one more construction line here, and then you will just join these. Easy and simple. Now, let's say this is facing upside down या फिर उल्टा रखा हुआ है. I'm going to follow the same process here. So what I'm going to do first, I'll divide my box into halves. Right? So you got the placement of your lenses where it is kept. Then you again gonna follow the construction lines which are given in the boxes. In a very simple way, you will get your object. See, simple, very, very simple. You just have to learn how to arrange those basic shapes there. Then, okay, perspective. Now there is one more way, one more view, which is your orthographic isometric thing. So the lines in this view are parallel, or we can say the lines in the same directions are parallel. अब अगर यहाँ पे perspective होता तो lines किसी एक vanishing point पर जाकर मिलती, but in your isometric view the lines in the same direction are parallel. This will be parallel to this one and this one, whereas here it's gonna meet at some vanishing point. That is the difference. Moving further, we have the composition of the object. Composition मतलब arrangement of the object, that it looks aesthetically pleasing, it solves the purpose, वो cluttered नहीं लगे हमारा. Let's look at the definition of the composition. Composition refers to the arrangement and organization of the object within a drawing to create a harmonious and balanced artwork. अब suppose करिए you have this poster here, right? इसको मैंने object 1 लिया and this is my object 2 or object B. Now I have arranged it in such a way कि मेरा A और B दोनों focus हुआ.
अब how I do that? There are a few rules for this thing. We generally follow what? The rule of thirds. कभी अगर आपने कैमरा देखा होगा, कैमरा is divided into a 3x3 grid. अब इस ग्रिड में if you are placing your object here, here, here और here, at these intersection point आपका composition ज़्यादा balanced दिखेगा और वो देखने में भी pleasing लगेगा. There is one more thing which is your golden ratio. मोस्टली नेचर में जो आपकी चीजें बनी होती है वो गोल्डन रेशियो को फॉलो करती हैं. एग्जाम्पल के तौर पर द शेल ऑफ योर सी, एग्जाम्पल के तौर पर द शेल. अब गोल्डन रेशियो कुछ इस टाइप से होता है. इट्स समवॉट लाइक दिस. इट फॉर्म्स योर स्पाइरल थिंग. अगर देखा जाए आपका टॉर्नेडो भी एक स्पाइरल फॉर्म में आता है. आप अगर सनफ्लावर के बीच में जूम इन करके देखोगे, दैट सीड्स आर आल्सो अरेंज्ड इन द स्पाइरल फॉर्म. सो मोस्टली इन द नेचर, मोस्टली द नेचर फॉलोज द गोल्डन रेशियो. ओके, प्रिंसिपल बैलेंस. आपका जब भी आप whenever you are composing or whenever you are doing the placement of the objects, it should actually look balanced. Symmetrical or asymmetrical distribution of an object or of the objects. Unity, cohesion among all the parts of the composition. Okay. यहाँ पर unity. Why do we need the unity? अब suppose करिए, look at the table which is kept in front of you. क्या टेबल पर सारा सामान आपका A, B, C, D कुछ ऐसे रखा है अलग अलग? No, right? Something is kept over the other. The other thing is kept beside the other. This is how the things are kept which are there on the table. तो हमारा जब composition हम बनाते हैं, we try to bring the unity between the objects, या फिर उनको पास रखना या फिर उनको overlap करके रखना. We try to do that so that it looks a little bit realistic. Contrast, difference in colors, shape, size to create visual interest. Okay. Now, suppose you have these two. Now you have 5 circles. You can vary the size of the circles here, and here you have 5 circles which are of the same shape, same color. Now here what I can do, I can play with the size of the circle. I can play with the contrast of that, right? 1, 2, 3, 4 and 5. Now this is looking a little bit what? Exciting. Whereas if you are going to place or if you are going to make everything monotonous, it won't create that drama which you need in your artworks. Here. So try to play with the size of the things, try to play with the contrast of the shapes, contrast of the colors there. Exploded view. Okay. So what is exploded view? Imagine you have some object which has a number of parts or the number of layers, right? अब वही object आप किसी भी एक डिजाइनर को या फिर एक मैन्युफैक्चरर को दे रहे हो बनाने के लिए. So what you need to show that object in the layers, ताकि किसी एक व्यूअर को, डिजाइनर को या फिर मैन्युफैक्चरर को समझ में आए कि what all parts are there, what all things are there, what all textures are there, what all materials are there. To have a better understanding, we need to have the exploded view of that object. An exploded view diagram shows the individual component of an object separated but positioned to show their relationship to the whole. Okay. Let's say you have a pen here. अब इस pen को I have to explode. Now what I'm gonna do, I'll show the relation of one part with the another
in such a way that it shows the unity, the cohesiveness, और वो एक ही layer में आए. Plus you need to keep in mind when you are unfolding this thing or opening this thing, आपको इस तरह से arrangement करना है जैसे आपका ऑब्जेक्ट का लेयर्स प्लेस हुआ है. मतलब कि अगर आप किसी भी चीज को खोलेंगे तो सबसे पहला आपका कौन सा चीज निकलेगा, देन व्हाट विल बी द सेकंड थिंग. इन द सेम वे यू हैव टू डू द ड्राइंग एज वेल, एंड देन यू नीड टू स्टार्ट विद द labeling of that thing. What is this part? What is this part? Here you can write about the material as well. Now here, this is a very good way of showing any object in the exam so that the viewer or the examiner has an idea, okay, that this layer is going here. जैसे कि इस बार UC में क्वेश्चन था that you have to design a lunch box for a kid who is 6 or 4 year old, और जो कि इंडियन डिशेस लेकर जा रही है जिसमें मोस्टली लिक्विड आइटम्स हैं. अब बच्चों ने क्या किया, they have shown the closed part. Fine, this is fine, but इसके बाद if you would have shown the exploded view so that the viewer has an idea कि okay, if you are opening this or unfolding this, कहाँ से आपका क्या पार्ट खुलेगा, अंदर से कैसा दिखने वाला है, उसका प्लान व्यू आप दिखाते, you would have gained the marks there. Purpose helps in understanding the assembly and disassembly of complex objects, useful in technical manuals and engineering drawings. But अगर आप ये चीज अपना एग्जाम में किसी एक नया ऑब्जेक्ट जब आप बना रहे हो, if you are going to use this exploded view, you can gain the marks there, extra marks there. Then we have the cross section. क्रॉस सेक्शन मतलब कि सपोज करिए कि आपने किसी भी एक चीज को हाफ में काटा. इट कैन बी कट इनटू वर्टिकल थिंग, इट कैन बी कट इनटू हॉरिजॉन्टल थिंग. हाउ दैट थिंग इज गोना लुक लाइक. अ क्रॉस सेक्शन व्यू is a view of an object as if it has been cut along a plane to show the interior structure. अब यहाँ पे किसी भी चीज का अगर आपको इंटीरियर दिखाना है, राइट, इसी पेन का अगर मुझे इंटीरियर पार्ट दिखाना होगा, वन इज आई कैन शो इट इनटू द एक्सप्लोडेड व्यू, द अदर इज आई कैन शो इट विद द क्रॉस सेक्शन व्यू. जैसे कि मुझे अगर इसी पेन का इंटीरियर पार्ट दिखाना है, व्हाट आई कैन डू, आई कैन जस्ट शो इट लाइक दिस. कैसे वो आधे में कटा है, अरेंजमेंट उसका कैसा है, कहां पर क्या पार्ट आया है. पर्पस ऑफ दिस थिंग रिवील्स इंटरनल फीचर्स एंड कंपोनेंट्स यूज्ड इन आर्किटेक्चर. अगर आप देखो प्लान व्यू में मोस्टली आपका क्रॉस सेक्शन व्यू यूज होता है, इंजीनियरिंग एंड इन मेडिकल फील्ड्स एज वेल. व्हाई? To understand the complexity of that object, to understand the arrangement of the internal part of that object. Okay, so now we have the plan view. अब plan view ये हमारा आर्किटेक्चर के लिए बहुत important है. अब देखते हैं कि what is plan view. A plan view is a top down view of an object or a space showing the layout and the arrangement of the components. ऐसे समझिए इसको सरल भाषा में या इजी शब्दों में कि प्लान व्यू हमारा एक टॉप व्यू होता है. अगर हम किसी भी एक चीज को एग्जैक्टली ऊपर से देखें विदाउट एडिंग द हाइट इनटू दैट, तो हमारा चीज वो कैसे दिखेगा. अगर लेट्स से आई हैव दिस चेयर हियर, राइट. अब इस चेयर को अगर मैं ऊपर से देखती हूँ, सो हाउ दिस चेयर विल लुक लाइक, आई विल बी एबल टू सी दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, राइट. सो दिस इज माय प्लान व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट और चेयर. अब ये जरूरत क्या है इसकी, सपोज करिए आप एक आर्किटेक्ट हैं और आपको एक लेआउट दिखाना है ऑफ द रूम की आपके रूम में जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी चीजें हैं, फर्नीचर है, उसका अरेंजमेंट कैसे होगा. यू मेक इट विद द हेल्प ऑफ द plan view so that it's easier for the viewer to understand that arrangement inside that room or that building or that space. Here, now have a look.
अगर मैं इसको एकदम टॉप से देखती हूँ, हाउ दिस विल लुक लाइक, मुझे ये दिखेगा A, B, C and D. So A, B, D and C, right? This is your plan view of this object here, whole. Now, what is the purpose of doing the plan view? Provides a clear layout. With the help of the plan, हम लोग समझ सकते हैं easily कि हमारे किसी भी एक चीज का, it's not just the architecture, किसी भी एक ऑब्जेक्ट का भी लेआउट कैसा है. कभी आपने ब्लूप्रिंट्स देखे होंगे. ब्लूप्रिंट्स में भी we use what? We use the plan view of that object. Provides a clear layout of spaces and components, essential in architecture and urban planning, whereas it is actually essential in objects as well. Now, whenever you are solving the questions in the exam in which you have to make a new object, try to show it in the exploded view, plan view and isometric view. ये तीनों views आप try करो कि आप दिखाओ उसमें, so that the viewer has a clear understanding कि how this object is working, what all layers are there और ये दिखने में कैसा होगा. Then we have the types of plan. Floor plan, site plan and landscape plan. Floor plan is किसी भी एक फ्लोर का प्लान. सपोज मैं इस रूम का एक प्लान बना रही हूँ या रूम का टॉप व्यू बना रही हूँ, दैट इज कॉल्ड माय फ्लोर प्लान. साइट प्लान illustrates the building footprint, property boundaries and surrounding of the landscape. Suppose आपका एक blueprint है किसी एक सोसाइटी का, उसमें बिल्डिंग्स भी होंगी, उसमें आपके ट्रीज भी होंगे, बाउंड्रीज भी होंगी, दैट इज योर साइट प्लान. लैंडस्केप प्लान, इसमें आपका किसी एक सिटी का प्लान, या फिर अगर ऐसे देखा जाए कि हमारे गूगल मैप्स में सैटेलाइट व्यू कैसा दिखता है, दैट इज योर लैंडस्केप प्लान. हियर दिस इज योर व्हाट. So this is what your floor plan is. We have the plan view of the property या फिर of a building. This is your site plan with the trees and the boundaries. This is your what? Landscape plan. As you can see, you have the roads, you have the ponds, you have the rivers, you have the buildings. So it's a bigger picture. Now we have elevation. So plan था हमारा किसी भी एक ऑब्जेक्ट को बिल्कुल डायरेक्टली ऊपर से देखना. एलिवेशन होता है आपका ऑब्जेक्ट का साइड व्यू. सी, प्लान इज द टॉप, एलिवेशन इज द साइड व्यू. कोई भी एक आपका ऑब्जेक्ट 3D होता है, राइट? अब 3D में ऑब्वियस है कि आपके ऊपर वाला पार्ट भी होगा, साइड वाला पार्ट भी होगा, नीचे वाला पार्ट भी होगा. ऊपर वाला पार्ट देखा जाए दैट इज अ प्लान व्यू, साइड वाला हो गया आपका एलिवेशन. एंड एलिवेशन इज अ साइड व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट और स्ट्रक्चर शोइंग इट्स वर्टिकल डिमेंशन एंड एक्सटर्नल फीचर्स. वर्टिकल डिमेंशन मतलब कि दीज थिंग्स. नाउ हैव अ लुक हियर. 4 टाइप के आपके एलिवेशन होते हैं. फ्रंट एलिवेशन, साइड एलिवेशन, रियर मतलब पीछे वाला साइड, एंड देन साइड एलिवेशन. बट अगर आपका कोई भी एक चीज ट्रायंगुलर हुआ विद द ट्रायंगल बेस, तब आपके 3 एलिवेशन ही होंगे या फिर 3 ही साइड्स होंगे. आई होप all the topics are clear to you guys. If you still have any doubt, please do write it down in the comment section. Thank you.